All right, welcome back to Weekend Hustlers, everybody. It's Pavlov here, and Nikita's with me too. Hey, everybody. Today, we're doing one of our deep dives, getting into the weeds of a really significant document. We've got excerpts from a major annual report looking at India's economy, finance, and regulation for 2024-25. Yeah, and it also gives us a bit of a sneak peek into what might be coming in 2025-26. It's basically the central bank's big review. Think macro numbers, banking rules, new tech, the works. Exactly. And our mission today is to, unpack all of that dense material for you. We'll pull out the important bits, the key takeaways. And help you understand what actually happened and why it matters. Think of this as your shortcut, your express route to getting up to speed without reading hundreds of pages. Absolutely. We'll walk through the economy, inflation, how money's moving, the rules of the game set by the regulator, and even some interesting stuff like managing currency and how AI is fitting in. And just a quick note, we'll have Hindi and Bengali versions of this discussion available too. Check the show notes for timestamps. Ready to jump in? Let's do it. Okay, so the big picture first, the economic landscape. How did 2024-25 shape up according to this report? Well, the assessment suggests growth was still pretty robust, but maybe seeing some moderation compared to the really strong pace we saw the year before. Moderation, okay. Any specific signs of that? Yeah, a key one they flag is gross fixed capital formation, or GFCF. Right, GFCF. That's the investment stuff. Buildings, machines, infrastructure. Basically building future capacity. Exactly. And the report says GFCF growth was 6.1% in 2024-25. Now that sounds decent, but it's actually down from 8.8% in 2023-24. Okay, so a noticeable slowdown in investment growth. And it seems linked partly to public spending too. The combined government capital outlay that's center and states together actually declined by 2.7% year on year in the figures up to February 2025. Wow, a decline. That's quite a shift from the push we saw previously. It is. And it wasn't just the headline GFCF number. Yeah. Other things, sort of coincident indicators, pointed the same way. Like what? Things like steel consumption, cement production, even imports of capital goods, they all showed a bit of softening during the year. Okay. And manufacturing capacity use. Still humming along. Pretty healthy, yeah. Seasonally adjusted, it was around 75.3%. So factories were busy, but maybe not quite as stretched as before. Got it. Okay, let's shift gears slightly. Agriculture. Always crucial. What did the report highlight there? It touches on the MSPs, the minimum support prices, for the main crops in 2024-25. The stated aim was to give farmers at least a 50% return over their production cost. And did they hit that target? Well, they give examples. For wheat, they say the return was 105% over cost, and for paddy, 50%. So, based on those figures, yes. And looking forward in agriculture. The report points to the union budget for 2025-26. The focus there seems to be on, boosting productivity, making farming more sustainable, and building better infrastructure in the rural sector. Right, so that's the look back at 2024-25. What about the outlook? Are things expected to pick up again? The report sounds fairly optimistic, especially for the manufacturing sector in 2025-26. Why is that? What's driving the optimism? Several things, really. They expect domestic demand to improve. Capacity utilization is already decent and could rise. Companies' balance sheets look healthier. Which means they can invest more easily. Exactly. Both corporate and bank balance sheets are stronger. Plus, business and consumer sentiment seems to be looking up. And policy support. Things like Make in India. Absolutely. Yeah. They mentioned the ongoing PLI schemes, the production-linked incentives, and the National Manufacturing Mission. Those are expected to give the sector a good tailwind. Okay, so if manufacturing and, I assume, construction are looking stronger. Yes. Construction is also expected to stay robust. Yeah. They mentioned things like the PMAI housing scheme and also the big second asset monetization plan, which aims to unlock, get this, 10 lakh crore. Wow, that's a huge number. So better manufacturing, strong construction. What does that mean for people, for jobs? The hope, or the expectation, is that this translates into more jobs being created. More jobs mean more income for people. Which then feeds back into stronger domestic demand, that classic virtuous cycle. Precisely. That's the idea. Now, the report had that dense table with specific sector data for 2024-25. Did anything jump out at you from there? Any interesting trends? Yeah, it gives you a more granular picture. Like overall industrial production grew, but if you look at commercial vehicle sales, they actually dipped in Q2 of 2024-25. Okay, so some lumpiness. Right. But then contrast that with toll collection value, which is a good proxy for transport activity, right? That showed really strong growth pretty much throughout the year.
Interesting. What about GST e-way bills? Goods movement. That stayed positive too, though it fluctuated a bit month to month. And the services sector composite index suggests activity was strong, especially towards the end of the fiscal year. So a mixed bag, but generally positive momentum. Okay. And the last piece on the real economy, employment. What did the PLFS survey show for 2023-24? The periodic labor force survey data covering July 23, June 24 had some pretty significant findings. Both the labor force participation rate, the LFPR, and the worker population ratio, WPR, increased. To what level? To their highest level since the survey started, actually. And what's really interesting is that a big driver of this was higher female labor force participation. That is significant, a real structural shift potentially, and unemployment. The overall rate didn't change much year on year, but digging deeper, it actually fell in urban areas, but ticked up just slightly in rural areas. That urban-rural divergence is worth watching. Okay, great overview of the real economy. Let's move to prices. Inflation. It's been top of mind globally. How did India manage in 2024-25? Well, the headline number, the main inflation measure, did moderate. It averaged 4.6% for the year. Down from 5.4% the year before. So an improvement. But that average hides a lot of volatility during the year. Ah, yes. I remember the headlines about food prices spiking at one point. Exactly. Food prices were the main story driving the ups and downs. You had weather issues causing problems, then a sharp jump around September, October, particularly in vegetables and edible oils. And then it eased off. Yeah, things got better from November through to March. On the flip side, fuel prices were actually in deflation. Prices were falling on average. Yeah. Lower LPG prices helped there. Okay, so food was volatile, fuel was down. What about core inflation? Excluding food and fuel, the underlying trend. That eased too, quite consistently through 2024-25. The report puts this down to a couple things. One, the impact of the central bank's earlier interest rate hikes finally feeding through the system. The lagged effect of monetary policy. Right. And also easing input costs for businesses. Plus, they give credit to the government supply side measures, actions to manage food stocks and things like that. So, summing up the inflation picture, why did it moderate overall? It seems like a combination of factors. Good harvests helped with food supply eventually. Global commodity prices, food and energy softened. Supply chains got a bit smoother. Those government actions we mentioned. And, of course, monetary policy doing its job. The food price spikes did correct in the last quarter. And the outlook? Smooth sailing ahead on inflation? They expect further softening, especially with good rabi crops coming in. But they're still cautious. Lots of uncertainties remain: geopolitics, global trade friction, weather. The drill. Needs constant watching. Vigilance is the word then. Okay, let's pivot to the money side. Monetary and financial developments. How did money supply and credit look? Looking at M3, the broad money measure, its expansion in 2024-25 was mainly driven by credit growth. Bank credit to the commercial sector grew by 11.8%. And lending to the government? Net bank credit to the government was up 11.2%. So both were contributing significantly. And bank lending itself, did it keep growing strongly? Yes. Sustained double-digit growth throughout the year. The report notes it was particularly led by lending to individuals' retail loans, housing loans, and also to the services sector. Okay. Now, how effectively did the central bank's policy rate changes pass through to what people and businesses actually pay for loans or get on deposits? Transmission was still happening, but maybe a bit slower in 2024-25 than, say, right after the big rate hikes. The average lending rates on new and existing loans only came down marginally. How marginally? Like 2 basis points on fresh loans, 8 basis points on outstanding loans over the year. Tiny changes. And deposit rates, did they go up much? They went up a little bit more, especially on outstanding deposits, 14 basis points increase there. Fresh deposit rates only up 3 basis points. It kind of suggests banks are still adjusting to past policy changes, maybe catching up on deposit pricing, while the impact on new lending rates has flattened out for now. But the report still feels transmission is generally better these days. Yeah, they do mention that regulatory efforts over the years have made the whole interest rate setting process more transparent and, effective overall. Okay. Turning to financial markets, what were the highlights there in 2024-25? A few things stand out. Foreign portfolio investors, FPIs, showed a real appetite for Indian debt. They poured in about 1.5 lakh crore during the year. Wow, significant inflows into bonds. Yeah. And related to that, corporate bond yields softened, moving generally in line with government bond yields. Trading activity in the secondary market for these bonds also picked up.
But when companies issued new bonds? Overwhelmingly done through private placements, like 99.2%. So not really offered widely to the public, more placed directly with big investors. Interesting. And the stock market, equities. The report mentions it and the role of FPIs and mutual funds, but the excerpts we have don't really dive into index movements or performance details much. Fair enough. Let's quickly touch on the external side, imports, overseas borrowing. Sure. On imports, POL, that's petroleum, oil, lubricants imports were up 3.9%. Electronic goods trade showed a deficit, though telecom gear was actually in surplus. Coal imports, interestingly, were down quite a bit, 20%. Why the drop in coal imports? Linked to higher domestic coal production, the report suggests. Okay, and borrowing from abroad. ECBs. External commercial borrowing saw a big turnaround. There was a net inflow of US $18.7 billion in 2024-25. That's compared to a net outflow the year before. So more money coming in via foreign loans. Where did it go? A big chunk, over 45%, went into infrastructure development, and short-term trade credit also saw net inflows. So quite a bit of foreign capital came in. Right, that paints a clearer picture. Now let's move to a really crucial area. Regulation, supervision, and financial stability. This is the central bank setting the rules and making sure the system is safe. Exactly. And the main message here is that the domestic financial system is considered sound and resilient. But the Reserve Bank isn't resting on its laurels. They're actively working to strengthen things further, especially with challenges like, fast tech changes, cyber threats, and even climate change risks popping up. So multiple departments involved in this. Oh, yeah. Financial stability, regulation, fintech, supervision, enforcement, consumer protection. It's a coordinated effort. What were some key regulatory moves mentioned? Well, the Department of Regulation was busy. They reviewed and rationalized rules for urban cooperative banks, the UCBs. This involved clarifying things like limits on small loans, housing loans, and how much exposure they can have to real estate overall. And giving them more time for certain provisions. Yes. The deadline for making provisions against those security receipts linked to bad loan resolution was extended to 2027-28. A bit more breathing room there. Okay. Anything on microfinance lending? Yes. They reviewed the risk weights for microfinance loans given out by commercial banks, RRBs, and local area banks. Basically, adjusting how much capital banks need to hold against these specific loans. And what about banks lending to NBFCs, the non-bank finance companies? That's been a hot topic. Right. After previously increasing the risk weights on those exposures, the report says a review led to restoring risk weights based on the NBFC's external credit ratings. So tying the capital requirement back to the rating agency's assessment of that specific NBFC. Seems like it. A bit more of a risk-sensitive approach being reapplied there. The report also talked about updates to the willful defaulter framework. What changed? This is quite important for loan recovery. A new master direction came out in July 2024. It refines the process, making sure borrowers get proper information, a chance to respond in writing, and even a personal hearing before being classified as a willful defaulter. So strengthening the procedural fairness aspect. Exactly. And critically, it requires banks and others to review all their bad loan accounts within 6 months to check for potential willful default. It's not just about new cases. Right. And this applies widely to commercial banks, UCBs, NBFCs, etc. Okay, that sounds pretty comprehensive. Now, fintech, always a buzzing area. What's the focus here? Huge focus, definitely. Balancing innovation and stability is the key theme. And a major highlight, especially given our focus, is the central bank digital currency. The CBDC, or Digital Rupee pilot. Right. What's the update there? Big news from April 5th, 2024. Non-bank payment system operators, think wallet companies, payment aggregators, were allowed to offer CBDC wallets to retail users. So not just banks anymore. That sounds like a significant move to get CBDC into more hands, potentially. That's exactly the stated goal. The report says it's intended to make CBDC retail accessible to a broader segment of the population by using the reach of these non-bank players. It's about widening the pilot, testing it more broadly. Okay, that's a clear push on the CBDC front. What else in fintech? Well, to get a better handle on the whole ecosystem, they launched 2 repositories in May 2024. A fintech repository to track fintech companies themselves. And an MTech repository. What's that? That one tracks how regulated entities, banks, NBFCs are adopting emerging technologies. Think AI, machine learning, blockchain, etc. The idea is to gather data, spot trends,
and inform policy. So, mapping the digital transformation as it happens, any other payment system updates? The list looked long. It did. Lots of tweaks and upgrades. Things like increasing the UPI Lite wallet limit, making digital payments more accessible for people with disabilities, updating the rules for big payment systems like RTGS and NEFT. Linking wallets to UPI apps. Yeah, allowing prepaid instruments or PPIs to be linked via third-party UPI apps. Also, that new feature to check the beneficiary's bank account name before sending money via RTGS and NEFT, that's a good security enhancement. Definitely helps avoid errors. Right. And requiring extra authentication for international online card payments, letting small finance banks offer small credit lines directly through UPI, and revising the ATM interchange fee structure. It's constant refinement. Phew. That's a lot going on just in payments. Was there anything about cross-border payments? Yes, Project Nexus. That's the initiative linking India's UPI with the fast payment systems of 4 ASEAN countries: Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. The goal is instant, cheaper retail payments across these borders. Wow, connecting domestic systems internationally. That's ambitious. Okay, shifting slightly within tech artificial intelligence. How is the central bank approaching AI regulation? Proactively, it seems. They set up an external committee in December 2024. It's called the Free AI Committee Framework for Responsible and Ethical Enablement of AI. Free AI. Catchy. What's its job? To recommend a comprehensive framework for how AI and machine learning should be used responsibly and ethically within the financial sector. So trying to get ahead of the curve on managing AI risks and potential. Sounds crucial. Okay, away from the cutting edge for a moment. What about basic IT systems and cybersecurity within the central bank itself? That's a constant focus, obviously, making sure their own systems are robust and efficient. One big internal project highlighted was the Prava AH portal, launched in May 2024. Prava AA. Yeah, it's a new online platform for regulated entities and individuals to submit applications and track their status digitally. It's meant to streamline things, make interactions smoother. It even won an award. So digitizing the regulated interface makes sense. Exactly. They're also focusing on developing key systems like their core banking platform, eCuber 3.0, and backup messaging and payment systems in-house for better control. And they ran a big cybersecurity awareness drive, CAD 2.0 themed Cyber Suraksha Bharat. Promoting cyber safety for everyone. Right. Plus, engaging with other central banks internationally on things like operational resilience and cyber best practices. And specifically on fighting fraud. Any updates there? Yes. They issued revised master directions on fraud risk management in July 2024. These aim to strengthen the role of bank boards in overseeing fraud risk, improve the systems for spotting early warning signs of potential fraud. Like the red flagged accounts framework. Precisely. And also making sure banks follow principles of natural justice when classifying fraud cases, learning from court judgments. Importantly, these tougher rules were extended to cover RRBs, rural co-ops, and housing finance companies too. Spreading the stricter framework wider. Okay, we've hit the big areas: economy, prices, money, regulation. Let's briefly cover some other important sections mentioned in the report excerpts. Currency management. Right, they have a big project called Samudra. Sounds quite grand. Samudra, meaning? With currency in Sanskrit. It's about modernizing the entire currency management system processes, tech, logistics, trying to make it more efficient and ensure good quality notes are circulating. And coins always seem to be either too many or too few. Huh? Yeah. They're trying to improve circulation using things like mobile coin vans and holding coin mellas. For banknotes, they're working on standardizing sorting machines using BIS standards. Any stats on notes in circulation? Yep. Value up 6.0%, volume up 5.6% in 2024-25. And the Euro 500 note is king, almost 31% of the volume and a massive 86% of the total value. 86% in value, that really shows its dominance. Okay, how about the central bank's international role? Pretty active. We mentioned Project Nexus already. They were also involved in G20 work supporting the Brazilian presidency. And the report notes the IMF's Article 4 consultation gave a positive assessment of India's growth, inflation control, financial stability, and fiscal efforts. Good reviews internationally. And how do they communicate all this? Public engagement. Multi-pronged approach. Website, social media, speeches, interviews, and those public awareness campaigns, RBI Kitahai, or RBI says. They ran 43 campaigns on 23 themes last year. Covering things like digital safety and fraud warnings. Exactly. An interesting detail. They've stopped using celebrity endorsements and are focusing more on their mascots, Money Kumar and M's Money. A shift in strategy there. Anything else on communication in this digital age? Yes, they updated their communication policy version 3.0 in early 2025 to explicitly include social media,
podcasts, and fact-checking. And they're developing something called RBI Suntahay. RBI listens. What's that for? Sounds like a system to monitor media, pick up on public sentiment or emerging issues, and track fake news related to the central bank or finance. Sort of an early warning system using public information flows. Very interesting. Okay, quick hits on internal stuff. Governance and HR. Standard overview of the board structure. On HR, they highlighted strengthening their mentoring policy, SABLE, and significant training numbers, over 500 officers trained in India, similar number trained abroad. And they're working on their next medium-term strategy plan, Utkarsh 3.0. Utkarsh 3.0. And managing government debt. The Internal Debt Management Department handles borrowings for the center and states. Central government borrowing was apparently lower in 2024-25. State borrowings were up, and the report notes their use of RBI facilities like SDF, WMA, and overdraft for cash management. Any internal ITRO or audit points? Yeah, mentions of enhancing the eCooper system modules and planning a business continuity dashboard. Internal audit functions as the third line of defense in their risk management framework. Got it. Last stop, the accounts, the central bank's own balance sheet. Right. Total assets increased, mainly driven by more foreign currency assets, gold, and foreign loans. Foreign assets make up over 74% of their balance sheet now. And income, where did it come from? Total income was quite high, but net income from domestic sources actually fell a bit, mainly due to lower interest on rupee securities. Interestingly, their liquidity operations, LAF, MSF, SDF, resulted in a net interest loss. A loss on liquidity management. How did overall income increase then? Because net income from foreign sources shot up significantly. The report says this was mainly due to exchange gains from foreign currency transactions, valuation changes, basically. So the strength of foreign assets really helped the bottom line. And the final outcome, the surplus transferred to the government. A very substantial 1,082,044.17 crore for 2024-25. That's a huge contribution to government finances. Okay, just to tie some threads together, the report included a chronology of policy announcements. Can you pick out a couple that echo the themes we've discussed? Sure. Beyond the MPC keeping rates steady, you see lots of regulatory updates listed. Things like the master circulars for UCBs we talked about, clarifications for P2P lending platforms run by NBFCs, and those reviews of risk weights for microfinance and NBFC exposures early in 2025. Reinforces the ongoing regulatory adjustments. What about fintech and payments in the chronology? Yeah, that section is PAC, reflecting how active it is. The April 5th, 2024 announcement letting non-banks offer CBDC wallets is definitely a key one, showing that push for broader access we discussed. Right, the CBDC expansion. And you also see things like the UPI light limit increase, the accessibility guidelines, the RTGS NEFT updates, including that beneficiary name check, the PPI linking via UPI apps, the extra security for international card payments. It all shows that constant effort to improve and expand digital payments throughout the year. It really paints a picture of rapid evolution in that space. Absolutely. The chronology also covers other bits like rules for foreign investment in debt and allowing stockbrokers more access to trade government securities for clients. Wow. Okay, we have covered a lot of ground from just these excerpts, from the macroeconomy and inflation battles. All the way down to specific rules for co-op banks, how fintech like CBDC is being rolled out, market dynamics, managing cash. Even the central bank's internal workings and international links. It really shows how complex and interconnected managing a modern economy's financial system is, doesn't it? It really does. None of these pieces exist in isolation. They all influence each other. And for you listening, wading through this detail isn't just academic. It gives you real context for the financial world around you. You know, why interest rates might change, what's behind inflation numbers, how your digital payments work and are kept safe, what new financial technologies are coming down the pike. Exactly. It helps you understand the forces shaping your own financial environment, the rules of the road, and how the system's performing. So let's leave you with a thought, especially building on all that discussion around tech, CBDC, AI, governance via free AI, fintech repositories, IT modernization. Given this pace of change, what do you think the financial and central banking landscape in India might actually look like, say, 5 years from now? Yeah, what new challenges or even opportunities might technologies like AI and digital currencies throw up that perhaps aren't even fully on the radar in a detailed review like this one today? Could be radically different, couldn't it? Something to chew on. Definitely food for thought. সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই বিশেষ আলোচনায়।
আমাদের হাতে এসেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মানে আরবিআই এর একদম টাটকা বার্ষিক প্রতিবেদন 2024-25। একদম ঠিক। তো এই বিশাল রিপোর্টের গভীরে গিয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব ভারতীয় অর্থনীতি ঠিক কোন পথে এগোচ্ছে। মানে একদিকে স্থিতিশীলতা, অন্যদিকে আবার ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে একটা দৌড়, দুটো কি একসাথে চলছে? একদম ঠিক পয়েন্ট। এই প্রতিবেদনটা আসলেই একটা আয়নার মতো অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা আবার ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দেয়। আমার তো মনে হয় আসল চ্যালেঞ্জটাই হচ্ছে এই স্থিতিশীলতা আর দ্রুত ডিজিটাল পরিবর্তনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখা। চলুন দেখি রিপোর্টে ঠিক কি বলছে। আচ্ছা, তাহলে চলুন শুরু করি অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দিয়ে। রিপোর্টে তো দেখছি হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি বেশ খানিকটা কমেছে। হ্যাঁ, কমেছে। আগের বছর ছিল 5.4%, এবছর গড়ে 4.6%। এটা তো বেশ স্বস্তির খবর, তাই না? অবশ্যই স্বস্তির। এর পেছনে দেখুন, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি যেমন আছে, তেমনি আরবিআই এর যে মুদ্রানীতি তার প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের দামে নাকি একটু অস্থিরতা ছিল? হ্যাঁ, সেটা ছিল। তবে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ইন্ডেক্স, এফআই ইন্ডেক্স। ও হ্যাঁ, ওটা কিন্তু বেড়েছে। মার্চ 2023-এ ছিল 60.1, এখন মার্চ 2024-এ সেটা 64.2। বাহ! এই বৃদ্ধিটা শুধু একটা সংখ্যা নয়, কিন্তু এটা আসলে দেখাচ্ছে যে অর্থনৈতিক সুবিধা, বিশেষ করে এই ডিজিটাল মাধ্যমে এখন আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির দিকে এগোনোর জন্য এটা খুবই জরুরি। তার একদিকে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলে আসছে, আবার অন্যদিকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারও হচ্ছে। আচ্ছা, বেশ, এবার যদি একটু ব্যাংকিং খাতের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, ব্যাংকিং খাত। বাণিজ্যিক ঋণ বেড়েছে শুনছি 11.8%, যদিও আগের বছরের থেকে একটু কম হয়তো। হ্যাঁ, সামান্য কম। তবে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস বা এনপিএ কমেছে। ওহ, এটা তো খুবই ভালো খবর। ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ভালো থাকছে। নিঃসন্দেহে এনপিএ কমাটা অবশ্যই ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার খুব ভালো ইঙ্গিত। তবে হ্যাঁ, ঋণ বৃদ্ধির হার যে সামান্য কমল, সেটাও একটু নজরে রাখার মতো। হয়তো ব্যাংকগুলো একটু বেশি সতর্ক এখন হতে পারে। এছাড়াও ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টররা এফপিআইস, হ্যাঁ, তারা ডেপথ মার্কেটে প্রায় 1.5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এই বছরে। 1.5 লক্ষ কোটি? আচ্ছা, এটা বাজারের আস্থারই প্রতিফলন। আর কর্পোরেট বন্ডের ইল্ডও কিছুটা নরম হয়েছে। সংস্থাগুলোর জন্য ঋণ নেওয়াটা একটু সহজ হয়েছে আর কি। বুঝলাম। এই যে স্থিতিশীলতার চেষ্টার কথা বললেন, এর পাশাপাশি ডিজিটাল পরিবর্তনের যে একটা বিরাট চাপ, সেটার কি খবর? প্রযুক্তি, বিশেষ করে ফিনটেকের ভূমিকাটা কেমন এখানে? আরবিআই কিন্তু এখানে পুরো দামে নেমেছে। একদিকে যেমন ধরুন ফিনটেক বা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, এইসব নতুন প্রযুক্তি ট্র্যাক করার জন্য ফিনটেক রেপোজিটরি বা এমটেক রেপোজিটরি চালু করেছে। আচ্ছা, তেমনি আবার পেমেন্ট ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনছে। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে সেটা হলো সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি বা সিবিডিসিআর। হ্যাঁ, সিবিডিসি নিয়ে তো অনেক কথা হচ্ছে। এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার তো চলছিলই, এখন নন ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরসদেরও এর ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তার এই ফোন পে বা গুগল পের মতো সংস্থাগুলো কি ভবিষ্যতে ডিজিটাল রুপি ব্যবহার করতে পারবে? এটা তো লেনদেনের জগতে একটা বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে। ঠিক ধরেছেন। উদ্দেশ্যটা হলো এই ডিজিটাল টাকার ব্যবহার আরও ছড়িয়ে দেওয়া, আরও সহজ করা। এর পাশাপাশি ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস বা ইউপিআই তো এখনই দারুণ জনপ্রিয়। একদম। আর আরবিআইয়ের লক্ষ্য হলো 2028-29 সালের মধ্যে এটাকে 20টা দেশে নিয়ে যাওয়া। বলেন কি, 20টা দেশে ইউপিআই? ভাবা যায়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে এর প্রভাব তো বিশাল হবে। অবশ্যই। আর বিভিন্ন আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য প্রবাহ নামে একটা কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল পোর্টালও চালু করা হয়েছে। সবকিছুই ডিজিটাল আর দ্রুত করার চেষ্টা। দারুণ ব্যাপার। আচ্ছা, এই যে এত ডিজিটাল লেনদেন বাড়ছে, তাহলে নগদ টাকার ভবিষ্যৎ কি? মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরবিআই নতুন কিছু ভাবছে কি? নগদ টাকার গুরুত্ব কিন্তু এখনও ভালোই আছে। আরবিআই ব্যাংকনোটের নিরাপত্তা আর স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, বর্তমানে যদি মূল্যের দিক থেকে দেখেন, 500 টাকার নোটের প্রচলনই সবচেয়ে বেশি, প্রায় 86%। ও, আর পুরো মুদ্রা ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটাকে আরও কার্যকর, আরও আধুনিক করার জন্য মুদ্রা নামে একটা প্রকল্পও চলছে।
সুতরাং ডিজিটাল এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নগদকেও অবহেলা করা হচ্ছে না। বোঝা গেল। মানে একদিকে ডিজিটাল ইনোভেশন, অন্যদিকে প্রথাগত মুদ্রা ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ, দুটোই চলছে। আচ্ছা, এই সব কিছুর পিছনে আরবিআইয়ের বৃহত্তর পরিকল্পনাটা কি? রিপোর্টে দেখলাম উৎকর্ষ 2.0, উৎকর্ষ 3.0-র মতো কিছু টার্ম আছে। হ্যাঁ, উৎকর্ষ হলো আসলে আরবিআই এর মধ্যমেয়াদী কৌশলগত কাঠামো। মানে সহজ কথায় বললে আগামী কয়েক বছরের জন্য তাদের রোড ম্যাপ আর কি। আচ্ছা, রোড ম্যাপ। উৎকর্ষ 2.0-এর পর্যালোচনা আর উৎকর্ষ 3.0-এর পরিকল্পনা তৈরি, এই সবই কিন্তু ওই ভারসাম্য রক্ষার কৌশলেরই অংশ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত বেশ সক্রিয়। G20, IMF-এর সঙ্গে সহযোগিতা তো আছেই। পাশাপাশি অন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট সহজ করার জন্য প্রজেক্ট নেক্সাসেও যোগ দিয়েছে। এটা ভারত আর আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে দ্রুত পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়তে সাহায্য করবে। এটাও কিন্তু ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে এগোনোর আরও একটা পদক্ষেপ। তাহলে সব মিলিয়ে যা বুঝলাম, আরবিআই একদিকে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে খুব চেষ্টা করছে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখছে, ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুস্থ রাখছে। ঠিক। আবার অন্যদিকে ডিজিটাল মুদ্রা, আন্তর্জাতিক ইউপিআই, ফিনটেকের মতো ভবিষ্যতের প্রযুক্তির দিকেও জোর কদমে এগোচ্ছে। বেশ একটা কঠিন ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট চলছে মনে হচ্ছে। একদম ঠিক বলেছেন, একটা কঠিন ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট। তবে এই রাস্তাটা কিন্তু একেবারে মসৃণ নয়। দেখুন, ভূ রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তার মতো ঝুঁকিগুলো কিন্তু এখনও বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। তা তো বটেই। আর এখানেই আজকের আলোচনার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন আসছে। আচ্ছা, এই যে আমরা ইউপিআই এবং সিবিডিসির মতো ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। হ্যাঁ, পড়ছি তো বটেই। এটা কি আগামী দিনে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়াবে, নাকি উল্টে নতুন ধরনের কোনো ঝুঁকি তৈরি করবে? বিশেষ করে যখন প্রথাগত ঝুঁকিগুলো একই সঙ্গে রয়ে গেছে। মানে এই ডিজিটাল নির্ভরতা আর চিরাচরিত ঝুঁকির যে টানাপোড়েন, এটা আগামী দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে মনে হয়। সত্যি ভাবার মতো বিষয়। এই ডিজিটাল নির্ভরতা আর পুরনো ঝুঁকির মিলবন্ধনে অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। वीकेंड हसलर्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक की जो ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट आई है 2024-25 की, उसकी थोड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। मतलब ये असल में बताती है कि अपनी इकोनॉमी किधर जा रही है, क्या मुश्किलें हैं और कहाँ मौके दिख रहे हैं। सही कहा। हमने कोशिश की है कि इसमें से कुछ सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकाल कर लाएं। हाँ, जैसे कि इकोनॉमी की हालत क्या है फिलहाल, महंगाई का क्या सीन चल रहा है, अपने फाइनेंशियल मार्केट्स कितने स्टेबल हैं, और हाँ, वो जो आजकल हॉट टॉपिक है डिजिटल करेंसी मतलब सीबीडीसी, उस पर क्या नया हो रहा है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इकोनॉमी की रफ्तार, उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से 2024-25 में जो भारत की असली जीडीपी ग्रोथ है, मतलब देश की कुल कमाई में जो बढ़ोतरी होती है, वो पिछले साल 9.2% थी, उससे घटकर 6.5% रह गई। 9.2 से 6.5, ये तो ठीक ठाक गिरावट है। और निवेश का, GFCF जिसे कहते हैं, हाँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो नया इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह में, उसकी रफ्तार भी थोड़ी धीमी हुई है। वो 8.8% से घटकर 6.1% पर आ गई। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात लग सकती है। हाँ, थोड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट 2025-26 के लिए थोड़ी बेहतर उम्मीदें भी दिखा रही है। अच्छा, किस सेक्टर में ज्यादा उम्मीद है? खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब चीजें बनाने वाले उद्योगों में, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है। ओके। और इसमें सरकार की जो स्कीमें हैं, जैसे PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली, हाँ, वो कंपनियों को जो फायदे मिलते हैं भारत में बनाने पर। बिल्कुल, और PMI यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब का काफी सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही मेक इन इंडिया और वो जो सरकार का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, हाँ, सरकारी संपत्ति से पैसा जुटाने वाला, उस पर भी फोकस बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आगे चीजें बेहतर होंगी। चलिए, ये तो राहत की बात है। अब अगर महंगाई पर आए तो वहाँ क्या हाल है? कुछ अच्छी खबर है? हाँ, यहाँ थोड़ी राहत है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब जो आम चीजों की महंगाई दर है, वो पिछले साल के 5.4% से कम होकर 2024-25 में औसतन 4.6% पर आ गई है। अच्छा, ये तो RBI के टारगेट रेंज के अंदर है ना? बिल्कुल, 2 से 6% का जो दायरा है उसके अंदर है। और कोर इन्फ्लेशन भी, मतलब जिसमें खाने पीने और तेल की कीमतें नहीं गिनते, हाँ, जो ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं। सही कहा। तो वो कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ा नरम हुआ है।
इससे लगता है कि आरबीआई ने जो पॉलिसी सख्त रखी थी और इनपुट कॉस्ट में जो कमी आई उसका असर अब दिख रहा है। लेकिन खाने पीने की चीजों का क्या, वो तो अक्सर परेशान करती हैं। हाँ वो तो है। फूड इन्फ्लेशन ने बीच बीच में थोड़ी दिक्कत की, खासकर मौसम की गड़बड़ी की वजह से। सब्जियां, तेल, इनके दाम बढ़े। पर अच्छी बात यह है कि सरकार ने सप्लाई साइड पर कुछ कदम उठाए हैं और आगे रबी की फसल अच्छी होने की उम्मीद है, तो शायद खाने की महंगाई और कम हो जाए। और फ्यूल का क्या? फ्यूल की कीमतें तो असल में गिरी हैं, वो एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ था ना, उसका असर है। तो कुल मिलाकर महंगाई थोड़ी काबू में दिख रही है, पर खाने की चीजों पर नजर रखनी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी थोड़ी सुस्त हुई, महंगाई कुछ काबू में आई। अब जरा फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, वो कितना मजबूत है? रिपोर्ट तो यही कहती है कि अपना घरेलू वित्तीय सिस्टम, मतलब बैंक और दूसरी फाइनेंशियल संस्थाएं, वो काफी मजबूत और लचीली बनी हुई हैं, रिजिलिएंट जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और बैंकों और बड़ी कंपनियों की जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी काफी हेल्दी बताई गई हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिस्टम स्टेबल रहेगा तभी तो ग्रोथ टिकेगी ना। बिल्कुल सही। और शायद इसी स्थिरता की वजह से सरकारी बॉन्ड्स, जीसेट्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर जो यील्ड है, मतलब जो ब्याज मिलता है, उसमें थोड़ी नरमी आई है। अच्छा, और विदेशी निवेशक एफपीआईज, उनका क्या रुख है? वो दिलचस्प है। एफपीआईज ने डेट यानी कर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी यानी शेयर बाजार, दोनों में अपना निवेश बढ़ाया है। ओह, दोनों में? हाँ, अकेले डेट मार्केट में ही सोचिए 2024-25 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। वाह, ये तो दिखाता है कि बाहर के निवेशकों का भारत पर भरोसा अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, ये काफी मजबूत संकेत है। अब उस एरिया पर आते हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है, फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, डीपीआई, हाँ, जो ट्रैक करता है कि डिजिटल लेन देन कितना बढ़ रहा है, हाँ, वो लगातार बढ़ रहा है। सोचिए मार्च 2018 में ये 100 था और सितंबर 2024 तक ये 465.3 पर पहुंच गया। 4.5 गुना से भी ज्यादा। कमाल है। ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से कैश से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। सही बात है। और आरबीआई इस पर नजर कैसे रख रहा है? आरबीआई भी काफी एक्टिव है। उन्होंने एक फिनटेक रिपोजिटरी और एक एमटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है। ये क्या है? इनका मकसद है कि कौन सी फिनटेक कंपनियां क्या कर रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जैसे AIML, इन सब पर नजर रखी जा सके। अच्छा, मतलब एक तरह का डेटाबेस। हाँ बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, यूपीआई को दुनिया भर में ले जाने का प्लान है। अगले 5 सालों में 20 देशों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 20 देश, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी है तो। और प्रोजेक्ट नेसेस भी चल रहा है। इसके जरिए भारत आसियान देशों के साथ, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, हाँ, इनके साथ जुड़कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान और तेज बनाने पर काम कर रहा है। ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल। और डिजिटल की बात चली रही है, तो आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी CBDC, उसका क्या स्टेटस है? उस पर कुछ खास अपडेट है रिपोर्ट में? हाँ, CBDC पर एक बहुत जरूरी अपडेट है। रिटेन CBDC, मतलब जो आम लोगों के लिए है, CBDC-R जी, उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले क्या था कि सिर्फ बैंक ही CBDC वॉलेट दे सकते थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। लेकिन अब 5 अप्रैल 2024 की जो पॉलिसी आई, उसके बाद से जो नॉन बैंक पेमेंट कंपनियां हैं, जैसे प्रीपेड वॉलेट वाले या पेमेंट एग्रीगेटर, अच्छा, जैसे अपने मोबाइल वॉलेट एप्स, हाँ बिल्कुल, वो भी अब CBDC वॉलेट ऑफर कर पाएंगे। इससे इसकी पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। अरे वाह, तो मतलब अब शायद हमें अपने मौजूदा पेमेंट एप्स में ही CBDC का ऑप्शन मिलने लगे। ये तो इसे अपनाने में काफी आसानी कर देगा। उम्मीद तो यही है, इससे एडॉप्शन बढ़ेगा। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स CBDC पर काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। बिल्कुल। आरबीआई भी इंटरनेशनल लेवल पर काफी एक्टिव है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी इस पर बात हुई कि कैसे फिनटेक और CBDC मिलकर इंटरनेशनल पेमेंट्स को सस्ता और तेज बना सकते हैं। तो भारत इस मामले में पीछे नहीं है? बिल्कुल नहीं, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ठीक है। और आखिर में एक और चीज रह गई, करेंसी मैनेजमेंट, मतलब नोटों का जो प्रबंधन होता है। हाँ, उस पर भी रिपोर्ट में जिक्र है। आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट को और मॉडर्न बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चला रहा है, सामुद्रा। हाँ, इसका लक्ष्य है नोटों की छपाई से लेकर सर्कुलेशन और फिर वापसी तक पूरी प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। ओके। और साथ ही क्लीन नोट पॉलिसी पर भी जोर है, मतलब बाजार में साफ सुथरे नोट रहें और नकली नोटों पर लगाम लगे। और कौन सा नोट सबसे ज्यादा चलन में है अभी? और अभी भी 500 रुपए का नोट ही बादशाह है। कुल करेंसी की जो वैल्यू है
उसका करीब 86% हिस्सा 500 रुपए के नोटों का है। और अगर नोटों की गिनती करें तो करीब 41% नोट 500 रुपए के हैं। और वो 2000 के नोट? वो तो अब धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अब उनका हिस्सा वैल्यू में सिर्फ 0.2% ही रह गया है। समझ गया। तो मतलब कुल मिलाकर अगर पूरी रिपोर्ट को देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, कुल मिला के तस्वीर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चैलेंज तो हैं, लेकिन वो लचीली बनी हुई है, रेजिलिएंट है, महंगाई काबू में आ रही है, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है और भविष्य का रास्ता डिजिटल इनोवेशन से होकर जा रहा है। बिल्कुल। खासकर यूपीआई का ग्लोबल विस्तार और सीबीडीसी पर जो काम हो रहा है उस पर बहुत जोर है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे ये यूपीआई दुनिया भर में फैल रहा है और सीबीडीसी का दायरा बढ़ रहा है, जरा सोचिए कि ये आने वाले टाइम में हमारे पैसे इस्तेमाल करने के तरीके को और भारत के ग्लोबल फाइनेंशियल रिश्तों को किस हद तक बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार जरूर करिएगा। अगले एपिसोड तक सुनते रहिए वीकेंड हसलर्स।